Students, welcome in chemistry session. Good morning to all of you. In continuation of our parts isomerism, in previous lecture we have been studied the part of the structural isomer, StereoIsomer, structural isomer. In structural isomer, chain isomer, position, functional metamerism, tautomerism. उसके बाद में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ई आइसोमर एंड झड़ आइसोमर. यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है ये कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी आर हैविंग व्हाट अ सोर्स ऑफ लाइट, हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट थे. सोर्स ऑफ लाइट हम यहाँ पे लेते हैं. The source of light is passed through. The source of light is passed through. If you are in this is the Nicol prism. Nicol prism. So what happened? The Nicol prism, it is the rays of light is emerging out of it, and we will get a single line. That single line is called as. We will get the single line. That single line is called as plane polarized light. पापा की प्यारी लाडली, पापा की लाडली, पापाची प्यारी, पापाची प्यारी, लाडली, पापा की प्यारी लाडली, पापा की लाडली, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट. पापा की लाडली, पापा की लाडली, ऐसे बोलेंगे, पापा की लाडली. प्लेन पोलराइज लाइट. Nicol prism will obtain, this is the rays of light is emerging out of it. First of all, the source of light is passed through Nicol prism. It obtain the single line, or the rays of light is emerging out of it. It get the single line. That single line is called as the plane polarized light. The plane polarized light is passed through a sample tube. We can take a sample tube. This is what we'll take. The sample tube is here, and in sample tube we'll take the one of the organic compound. Sample tube, we'll take this one of the organic compound. That organic compound, it may be what, two ways. This is what A, B, C, D, A, again A. The organic compound having the two A's, that is what, first A1 and this is the B1. So this is called as the chiral atom. This is chiral atom, and this compound is known as chiral molecule. As you can say, this is the chiral molecule. This is known as chiral molecule, asymmetric one. This chiral atom is known as what? Stereogenic atom. Stereogenic or asymmetric. It is called as asymmetric, and this is achiral molecule. Achiral molecules. So what is the actual phenomenon? When the source of light is passed through Nicol prism, the rays of light is emerging out of it, and it will be obtained the single line, single rays. That single rays is known as the plane polarized light, and this plane polarized light is passed through the sample tube. The sample tube contains this organic compound, and this organic compound is having the two types. The two types of the compound. It may be chiral molecule or it may be achiral. If we can take, this is the chiral molecule first. यहाँ पे हम इस कंपाउंड में, इस सैंपल में कायरल मॉलिक्यूल लेते हैं. कायरल मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड हम ले सकते हैं COOH. This is the OH, this H, and this one is the CH3. This is the chiral center.
Such types of the molecule, it is called as what? Lactic acid. This is known as what? Lactic acid. If you can take this lactic acid in what? Organic sample tube, then we will obtain, this is the two direction rays. Like this is the clockwise direction, and this is another is what? Anti-clockwise direction. When it is obtained the clockwise direction and anti-clockwise direction, if we can take this such types of the molecule, that is the chiral molecule in the sample tube, then it will obtain the dextro. This is called as the clockwise direction, is known as dextrorotatory, and if it is rotated by anti-clockwise direction, is known as what? Leo-rotatory. Dextrorotatory 50% and leo-rotatory 50%. So the 50-50, it is called as what? Racemic mixture, is known as what? A racemic mixture or racemization is there. What happened here? काय झालं? सोर्स ऑफ लाईट घेतला, निकोल प्रिझम मधून पास केला, सिंगल लाईन मिळाले, त्या सिंगल लाईनला प्लेन पोलराइज लाईट असं म्हणायचं. प्लेन पोलराइज लाईट आपण एक सॅम्पल ट्यूब घेतलं, त्या सॅम्पल ट्यूबमध्ये दोन टाईपचे आपण कंपाऊंड घेऊ शकतो. ज्यावेळेस आपण एकाच टाईपचा कंपाऊंड घेतला, फॉर एक्झाम्पल कायरल मॉलिक्यूल म्हणजेच लॅक्टिक ॲसिड जर आपण या सॅम्पल ट्यूबमध्ये घेतला, तर काय होणार? दोन टाईपचे डायरेक्शन आपल्याला मिळणार, एक मिळणार क्लॉकवाईज डायरेक्शन आणि एक मिळणार अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. क्लॉकवाईज रेस क्लॉकवाईज डायरेक्शनला आपण डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणतो, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला आपण लिओ रोटेटरी म्हणतो. डेक्स्ट्रो रोटेटरी 50% मिळणार, लिओ रोटेटरी 50% मिळणार. त्या मिक्सचरला काय म्हणतात? रासेमिक मिक्सचर म्हणणार. या फेनॉमेनॉनला दिस concept is a racemization is there. So this overall concept it is called as what? Optical active. तो यहाँ पे जो हमने मॉलिक्यूल लिया लैक्टिक एसिड या ये मॉलिक्यूल, तो ये क्या होता है? ऑप्टिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं ॲक्टिव्ह. तर तो मॉलिक्यूल काय असेल? ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असेल. कोणता मॉलिक्यूल ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असेल? हा मॉलिक्यूल. म्हणजे या मॉलिक्यूलमध्ये हा जो कायरल आयटम आहे याला 4 डिफरंट ग्रुप अटॅच आहे. मग तो मॉलिक्यूल जर आपण सॅम्पल ट्यूबमध्ये घेतला तर आपल्याला दोन टाईपचे डायरेक्शन मिळतात, एक क्लॉकवाईज डायरेक्शन मिळणार आणि एक अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मिळणार. डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिओ रोटेटरी आपण त्याला म्हणतो. 50% डेक्स्ट्रो 50% लिओ. त्या मिक्सचरला आपण रासेमिक मिक्सचर, रासेमायझेशन असं म्हणतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? दिस इज नोन ॲज व्हॉट? ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह फेनॉमेनॉन. तर हा मॉलिक्यूल जो असेल तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असेल. जसं की आपण ग्लुकोज मॉलिक्यूल सुद्धा इथं घेऊ शकतो, C6H12. So this what we can take, this is the glucose molecule. So glucose molecule, lactic acid, या टाइपचे molecules, और we can take this fluorine, chlorine, bromine and iodine. ऐसे टाइप्स के कंपाउंड मॉलिक्यूल हमें रासेमाइजेशन और रासेमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि SN1 रिएक्शन जो है एज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन यहाँ पे जैसे कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इट इज़ रिएक्टेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे लिया जाता है वाटर मॉलिक्यूल या इथेनॉल या मिथेनॉल, ETOH और MEOH, मिथेनॉल, इथेनॉल और वाटर. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हमें दो टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. एक मिलता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा मिलता है लिओ रोटेटरी. 50% ये वाला और 50% लिओ वाला. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ रासेमिक मिक्सचर. डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिओ रोटेटरी, 50% ये और 50% ये. दिस टाइप्स ऑफ द कंसेप्ट इट इज व्हाट? एज वी आर हैविंग दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्शन SN1 types of the reaction. ये tertiary butyl bromide, if it is react with the potassium hydroxide in presence of polar protic solvent like water, ethanol, methanol, यहाँ पे हमें dextrorotatory और leo-rotatory, this concept it is called as what? enantiomer. हे एकमेकांचे कोण झाले? नॉन सुपर इम्पॉसिबल झाले. enantiomer याला आपण म्हणतो. सो as you can say it is called as enantiomer. enantiomer. So this enantiomer 50% dextro, 50% leo. So this is called as what? As we can say non super impossible mirror images. तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का जो हम लैक्टिक एसिड या कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कंपाउंड की बात करते हैं, कौन से कंपाउंड के? कायरल कंपाउंड की हम जो बात करते हैं, तो ये कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है.
क्यों? क्योंकि उसमें से जब हम सैंपल ट्यूब में से ये प्लेन पोलराइज लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो 50% डेस्ट्रो लियो मिलता है, 50% डेस्ट्रो और 50% लियो। रासमाइजेशन होता है, यहाँ पे रासमाइजेशन होता है इन द पार्ट ऑफ SN1 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। इट इज मोस्ट यूजफुल और एज यू कैन से एप्लीकेबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिव फेनोमेना। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर है इसको हम एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म will get the single rays. Source of light is passed through nickel prism. It obtain single rays or rays of light is emerging out of it. The single rays is pass through what? A sample tube. When its sample tube contain these types of the molecule, chiral molecule, for example lactic acid, glucose molecule, or the such types of the compound, it will obtain 50% clockwise direction and 50% anti-clockwise direction, means dextro-rotatory and leo-rotatory racematization is there. This concept is called as what? Optically active concept. इसको optically active concept कहा जाता है. So this overall phenomenon is known as what? Optical isomer. यहाँ पे हम application SN1 टाइप्स के रिएक्शन क्या होता है और SN2 टाइप्स का रिएक्शन क्या होता है इन डिटेल में हम हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और अल्किल एंड अरिल हैलाइड, उस टॉपिक्स में हमें SN1 और SN2 क्या होता है ये रिएक्शन हम देखेंगे. बिफोर दैट again we will discuss in the part of the reaction mechanism, a part of the reaction and its types and mechanism. So this concept. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम ये मॉलिक्यूल इस सैंपल ट्यूब में लेते हैं तो हमें डायरेक्शन कौन सा मिलेगा. यस जैसे कि हमने ये कंपाउंड यहाँ पे लिया सैंपल ट्यूब में, हमें ये दो डायरेक्शन मिली. सेम कंपाउंड हम जब यहाँ पे ये लेते हैं, ये कंपाउंड हम यहाँ पे लेंगे, इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस ये कंपाउंड हम लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे मिलेगी. तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी, जैसी ये डायरेक्शन है वैसी ही मिलेगी. इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. और ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है. क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होता है? क्योंकि सैंपल ट्यूब में हम सैंपल ट्यूब को रेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो हमें दो टाइप्स के यहाँ पे डायरेक्शन मिलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी. इसीलिए हम इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, such types of the molecules are what? Optically active. तो यहाँ पे हम in detail in continuation of the parts, in continuation of our parts we are discussing about what? Absolute configuration and relative configuration. As we know, this is the relative. Actually this dextro and leo, so this dextro and leo, it is most important. It is known as D and L. This is called as what? Relative. As you can say relative configurations. इसको हम रिलेटिव कन्फिग्यूरेशन कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव कन्फिग्रेशन. उसके बाद में हमें आरएस क्या होता है? रेक्टस और सिनिस्टर. इसको हम एब्सोल्यूट क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऐसे कहते हैं. डीएल आपण रिलेटिव कन्फिग्रेशन आणि आरएसला ॲब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन असं म्हणतोय. यावर नीट JEE मध्ये एक क्वेश्चन कंपल्सरी असतं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी कन्सेप्ट, ऑप्टिकल आयसोमर and what? Again dextro leo concept as well as R and S configuration. मॉलिक्यूल का R कन्फर्मेशन, S कन्फर्मेशन, RR का रिलेशन क्या है, SS का रिलेशन क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. एनान्शियोमर, डायास्टीरियोमर, होमोमर, ईपीमर, आइनोमर, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? फ्रॉम the optical isomer. As you can see, this is known as what? Optical isomerism.